स्टार्ट के टाइम लगी स्टार्ट कले ये करिवे Good afternoon, everyone. This is MOHAMMAD BULAND AKHTAR, RAVENSHAW Higher Secondary School, CUTTACK. Welcome to the BMS class. Well, today I will teach you Unit 4 of Business Mathematics and Statistics, that is collection of data. In the last class, we have already discussed about the definitions of the statistics in plural sense, singular sense, and we have already discussed about functions of statistics, and we have discussed about the stages of statistics. That is, we have already discussed that the stages of statistics, that is collection of data, organization of data, presentation of data, analysis of data, and interpretation of data. These are the stages of statistical study. So if we now will discuss about collection of data, which is the first and foremost function of the statistical study. So when we are going to study about the statistical study, when we do statistical study, then the first step that we do is the collection of data, because the collection of data, if we know that data is the most important function of statistics. That is, in statistics, we basically deals with data. So data is the base in which we study statistics. So before going to study about collection of data, we discuss some important terms of the statistics, important terms related to collection of data. तो आमे ये जो data रा किसी terms पढ़ीबा, से terms गुरा तमरा आमे जो collection of data पढ़ीबा, से थरे से मने useful अच्छी terms जोटा को you have to remember this terms so that you will easy to understand the collection of data. So first आमे जो term देखीबा, that is the data. So data जदि हमें कहवा, data is the base on which the superstructure of statistical investigation is made. आमे जो statistical investigation करूछु, किसी statistical आमे survey करूछु, तो survey रा जो base रहउची, that is depends upon the data. आमर data ऊपर depend, कहना आमर गोटे investigation रा किसी भी investigation आमे करिबा, statistical survey करिबा, तो statistical survey और statistical investigation रा जोटा base रहउची, the mainly the actually the success or failure of the statistical investigation is depends upon the data. कहना data जदि आमे गोटे data quality of data, को type रा आमे data collect करछु, quality, adequacy, accuracy of data, data ऊपरे fully depend करूची statistics ता. So the data is the most important functions of statistics. Then हमें देखिबा statistical inquiry. तो statistical जदि inquiry हमें देखिबा, by statistical inquiry we mean an investigation on a topic by an agency wherein relevant quantitative information is collected. That is statistical inquiry हमें जदि कहबा, तो we mean that it is an investigation on a particular topic. जेतले हमें गोटे objective, गोटे particular objective पाई हमें गोटे हमें जो collection data collect करछु in quantitative form. So for any statistical inquiry, हमें जदि statistical inquiry देखिबा, the problem is that to collect facts and figures. कहना हमें गोटे statistical जेतले inquiry करिबा, गोटे हमें particular investigation करिबा, तो सेति पई हम कोन दरकार के data दरकार. तो data जोटा रहला facts and figures of the is relating to particular phenomenon. Particular phenomena means हमें कौन करे, जो study टा में करिया चाहू. Suppose हमें गोटे class रा में देखियो जानिया चाहू गोटे class रा पिला माने को performance कोन,
पिला माने को टाइप रो से माने को टाइप रो पढुचन भलो पढुचन खराब पढुचन तो सेटा जाने पे हम कोन करिया ताको मार्क्स हम देखियो तो हम से अनुसार जदी हमर ऑब्जेक्टिव अछि परफॉर्मेंस पिला के जानिया पे तो देन हम कोन करबा ना हम ताको मार्क्स कलेक्ट करबा तो सेटी पे स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी रे कोन होची तो बेसिक प्रॉब्लम ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज टू कलेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स so so that means I mean देखिले so the purpose of collection of data is to collect evidence for reaching a sound and clear solution of a problem that means हमर एठी जो statistical inquiry जो देखिबा तो मेन हमर purpose of collection of data टा काई जदी collection of data रा purpose देखिबा काहे कि हमें collection करछु to get at a clear solution to a problem that means हमें जते देखिला कि हमें देखिलो कि हमरो marks of the students रो जो हमें कलेक्ट करूछु पिलांग सेटा कोच में करछु कि to know about the performance of the students of in a class तो तांकर जते परफॉर्मेंस हमें जते जानियो चाहिबा तो परफॉर्मेंस में मार्क कलेक्ट कलु तो सेति पई एठी कोन हैला पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इज टू गेट द एविडेंस मींस हमर जो हमें देखिए पिलांग परफॉर्मेंस को बेले सेटा केमि मार्क्स जानिबा तो दैट मार्क्स विल बी द एविडेंस फॉर टू गेटिंग द क्लियर साउंड सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम दैट इज पिला मानक परफॉर्मेंस टा गणा में जानि परिबा तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी देन हमें जे देखिबा देन अदर टर्म्स को हमें जिबा दैट इज इन्वेस्टिगेटर तो इन्वेस्टिगेटर काहू कहबा द पर्सन हु कंडक्ट द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज नोन एज इन्वेस्टिगेटर तो इन्वेस्टिगेटर किए जे स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करूची तो हमर जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी रे कोना ना हमें स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में डाटा कलेक्ट करछु फैक्ट्स एंड फिगर कलेक्ट करछु तो जे से डाटा टा फैक्ट्स एंड फिगर टा को कलेक्ट करूची तो ताको हमें कहबा इन्वेस्टिगेटर देन हमें देखिबा एन्यूमरेटर काहू कहबा एन्यूमरेटर होची जते बेले गोटे हमें इन्वेस्टिगेशन करूछु तो से इन्वेस्टिगेशन रे इन्वेस्टिगेटर को किछि पर्सन्स किछि लोक माने हेल्प करंती जो माने इन्वेस्टिगेटर्स माने जो हेल्प करंती जो माने इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करंती टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन टू कलेक्ट द फैक्ट्स एंड फिगर्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे पई इन्वेस्टिगेटर्स को जो माने सपोर्ट करंती तो तांको हेल्प करंती तांको हमें कहबा एन्यूमरेटर ओके नेक्स्ट हमें देखिबा रेस्पोंडेंट्स मींस रेस्पोंडेंट और हमें ताको इन्फॉर्मेंट भी बोलू कहि परिबा रेस्पोंडेंट्स मींस द पर्सन फ्रॉम हुम द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड जहां टू हमें स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिबा तो हमर स्टैटिस्टिकल जतले हमें स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करछु इन्वेस्टिगेटर रहंती एन्यूमरेटर रहंती से माने कोन करंती स्टैटिस्टिक जो डाटा कलेक्ट करियो तो कहां टू कलेक्ट करिवे दे कलेक्ट द डाटा फ्रॉम रेस्पोंडेंट्स और इन्फॉर्मेंट्स हम ताको इन्फॉर्मेंट्स भी कहि परिबा तो से मानठो से डाटा कलेक्ट करा जाय तो द पर्सन फ्रॉम होम statistical information is collected is known as respondents so next हमें देखिबा next term is survey so हमें जदि survey देखिबा survey is a method of gathering information from individuals तो survey जदि हमें कहिबा survey is a method तो survey गोटे मेथड जो हमें कोन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे गोटे मेथड from individuals तो सेटा को हमें कहिबा survey the main purpose of survey is to collect data to describe some price quality usefulness etc तो एठी हमें कोन करिबा ना गोटे हमें पर्टिकुलर सर्वे रे हमें कोन करिया गोटे एठी हमें जो डाटा टा कलेक्ट करिया टू डिस्क्राइब सम प्राइस को डिस्क्राइब करि परिया क्वालिटी यूजफुलनेस एटा डिस्क्राइब करे ता माने बेसिकली हमें सर्वे रे कोन होय ना हमें सर्वे रे जो पर्सन्स माने को पग जाई कि गोटे आइदर गोटे पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर पर्सन ऊपर हमें किछि हमर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करू तो एटा को हमें कहिबा सर्वे तो हमें गोटे प्रोडक्ट और हमें कोन हबा पर्सन मानकर ऊपर किछि व्यूज हमें कलेक्ट करि परिबा फ्रॉम सर्वे तो these are the important terms of statistical collection of data so in the next steps we'll discuss about sources of data so we have already discussed about different terms used in the collection of data now we will discuss about sources of data so data is the most important function without data the entire statistics or statistical survey or inquiry is useless because statistics is based on the data so how we get the data from where we get the data how to collect the data this is called the sources of data from where we collect the data so the sources of data when we go to the sources of data so from sources there are in basically we know that there are two sources of data that is internal sources and external sources so we collect data from internal as well as external sources of data and
if external sources is further categorized as primary source of data and secondary sources of data. So this is the classification of collection of data, sources of collection of data. So now we'll discuss about the different sources of data. That is, basically broadly the sources of data is divided into two parts. That is two types of data, internal sources and external sources. So if we go to the internal sources means in an organization when the data is collected from its reports and records. That is, the data is within the data we collect is within the organizations. Means आमे जो देखिबा गोटे organization जदि गोटे company अछि से company कौन करे ना निजर जो किछि publications निजर किछि reports records रो डाटा टाको collect करूची सेटा को कहबा आमे internal sources of data. तो internal sources of data माने आमे कहले जोटा कि हमर within the organizations हमर जो companies अछि से companies हला जे कोन से भी organization हला से तार निजर किछि record रो कि नले तार किछि रिपोर्ट्स रो से पाउची डाटाटा सेटा को आजो इंटरनल सोर्सेस. जदि हमर एग्जांपल देखिबा the company publishes its annual report on profit and loss, total sales, loans, wages, etc. It's called as internal sources. जदि कोन कंपनी तार निजर एनुअल रिपोर्ट कंपनी कोन करते निजर एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करंती जेम तार प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर हैला तार केते टोटल सेल्स केते हिची केते लोन्स हिची वेजेस हिची ए सब जो सोर्सेस ए जो डाटाटा में रहला ए पूरा कोन अब इंटरनल सोर्स काहेला से कंपनी निज organizations through निजे organizations through निजर internal sources से डाटाटा पाइला within the organizations. So it is called as internal source. तो internal source basically हमें कोन जानलु internal source जेतले गोटे organization जो डाटाटा से कलेक्ट करू ता निजर रेकॉर्ड रो कि निजर किछि रिपोर्ट से पब्लिश करूची से रिपोर्ट रो से डाटाटा जदि फाइंड करूची तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल सोर्सेस ऑफ डाटा. नेक्स्ट हम जे देखिबा एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ डाटा. So external sources of data, collection of data, हमें देखिबा it refers to the data collected from outside the organizations. हमें जे देखिबा outside the organizations माने जदि हम निज ऑर्गेनाइजेशन भितर हमें से डाटाटा कलेक्ट करनु हमें सेटा कोन कहू किछि अन्य ऑर्गेनाइजेशन नु कलेक्ट करछन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन माने हमें निजे कलेक्ट जेमति हमें रिपोर्ट्स हमें इंटरनल सोर्स से कोन दल निजर जो रेकॉर्ड और रिपोर्ट्स जो डाटाटा पाउथु सेटा को हमें कहबा इंटरनल सोर्स. जदि हम एक्सटर्नल सोर्स देखिया त हमें ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन डाटाटा हमें पाउछु सेटा को हमें कहबा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ जोटा कि हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा. तो आमे जदि यार गोटे एग्जांपल्स देखिबा सपोज आमे देखिबा गोटे टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी अछि. इफ अ टूर एंड ट्रैवल्स कंपनीज ऑफ्टन इंफॉर्मेशन ऑन ओडिशा टूरिज्म फ्रॉम ओडिशा रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इट वुड बी नोन एज एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ डाटा. जति गोटे टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी अछि सी कोन करछि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओडिशा टूरिज्म जो अछि इंफॉर्मेशन सेटा से हमर ओडिशा रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो डाटाटा नउछि ता माने एटा कोन कहि एक्सटर्नल सोर्सेस काना देखो जो एठी हमें जति एठी हमें देखिबा जे टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी अछि से डाटाटा कोठी नेला टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी आउटसाइड द कंपनी मींस सेटा काट नेला तनो ओडिशा रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो डाटाटा नेला ताले सेटा कोन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन सला तो सेटा को आजिबो एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ डाटा. सो जदि हमें देखिबा एक्सटर्नल सोर्सेस टा कोन रहउछि जोडा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन रा हमें जो डाटाटा कलेक्ट करछु सेटा को एक्सटर्नल सोर्सेस. एंड आल्सो हमें जदि कहबा एक्सटर्नल डाटाटा कैन बी कलेक्टेड इन फ्रॉम बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सोर्सेस. हमें जदि एक्सटर्नल डाटाटा हम जो कलेक्ट करबा तो एक्सटर्नल डाटा इज कलेक्टेड बोथ फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेस एज वेल एज सेकेंडरी सोर्सेस. तो एठी हमें जदि देखिबा ताले तो बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सोर्सेस रो हमें जो डाटाटा कलेक्ट करछु सेटा हमें कहबा कोन एक्सटर्नल सोर्सेस. तो लेट्स कम टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा. सो हमर बेसिकली जो एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ डाटा जोटा थिला तो एक्सटर्नल सोर्सेस डाटा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन था. एक्सटर्नल सोर्सेस दैट मे बी प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. लेट्स कम टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा. तो प्राइमरी डाटा हमें सेकेंडरी डाटा देखिबा त प्राइमरी डाटा इज द डाटा व्हिच इज कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज. दैट मीन्स हमें जदि प्राइमरी डाटाटा देखिबा जो डाटाटा में ओरिजिनली कलेक्ट करा होची ओरिजिनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेटर अछि कि एजेंसी अछि बट फॉर द फर्स्ट टाइम कलेक्ट करछि गोटे स्पेसिफिक पर्पज पे. दैट मीन्स तमे एठी कोन होची ना एटा को हमें कहि पारे प्राइमरी डाटाटा को हमें कहि परिबा जे फर्स्ट हैंड डाटा भी कहि परिबा. फर्स्ट हैंड डाटा मीन्स तमे ओरिजिनली तमे डायरेक्ट से माने गोटे जगह को स्पॉट ऑन द स्पॉट पहुंची से डाटा कलेक्ट करूछो तो दैट इज कॉल्ड एज कोन हबो से डाटा को हमें कहि परिबा प्राइमरी डाटा. दैट इज इट इज आल्सो कॉल्ड एज
फास्ट हैंड डाटा भी तुम कहि परियो, काहे ना तुम डाटाटा जेतेबेले कलेक्ट करछो तुम डायरेक्टली जो जो ऑन द स्पॉट जोठी किछि इंसिडेंट हेछि कि किछि किछि हैपनिंग्स हेछि तुम सेठी ऑन द स्पॉट से डाटाटा कलेक्ट करछो, तो सेटा डाटाटा को हम कहबा प्राइमरी डाटा। दैट मींस दैट इज आल्सो कॉल्ड द फास्ट सोर्स। हमें जो दो सोर्स हमें जो डाटा हमें कलेक्ट करूछु, प्राइमरी डाटा जो सोर्स फ्रॉम व्हिच द प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड इज आल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स मींस तुम किछि भी डाटा कलेक्ट करछो डायरेक्ट जाई कोन होछि ना से ऑन द स्पॉट और से जो ऑन द स्पॉट डाटा कलेक्ट करछो और फ्रॉम द तमे जोठी जो हैपनिंग्स ता हेछि से पर्टिकुलर जगह रु तमे डाटा कलेक्ट करछो एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज और तमे एठी जो डाटा कलेक्ट करछो एटा डायरेक्टली तमे कलेक्ट करछो। जदि हमें देखिबा सपोज हमें इन सपोज जो पिलांग परफॉर्मेंस में हमें कोन इंडिविजुअल पिलांग कर मार्क्स ता इंडिविजुअल पिलांग पाखु जाई कलेक्ट करलो, तो सेटा हमें कहबा कोन सेटा होछि हमरा प्राइमरी सोर्स। माने हमें इंडिविजुअली गलु जण जणे को पिलांग थ्रू हमें मार्क ता कलेक्ट करलु देन सेटा दल तो एटा कॉल्ड प्राइमरी सोर्स। दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, दैट इज प्राइमरी डाटा। हमें जे देखिबा जे गोटे जे पॉपुलेशन सेंसस होछि हमर सेंसस, तो कौन सेंसस मीन्स हमें कौन एवरी 10 ईयर रे कौन हुए ना गवर्नमेंट गोटे सेंसस रहे जोटा हमें कहबा जनगणना। सेतरे कौन हुए ना से किछि अपॉइंटमेंट करे गवर्नमेंट लोकन को अपॉइंटमेंट करे एंड से माने कौन करती घर घर बुली की से माने तांको डाटा कलेक्ट करतो केते मेंबर्स अछंती से सब डिफरेंट डाटा से माने कलेक्ट करतो। तो ये जो पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करछि, इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, दैट इज प्राइमरी डाटा। काहे ना एठी गवर्नमेंट कौन करछि डायरेक्टली जो लोक मान को अपॉइंटमेंट करी से माने डायरेक्टली कलेक्शन डाटा करछंती से माने ताको कहबा पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोटा रहला, दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डाटा। देन कम्स टू द प्राइमरी डाटा। जदि हमें वंस कलेक्टेड प्राइमरी डाटा वंस कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड becomes the secondary data, that means जदि प्राइमरी डाटा जोटा कि सपोज हमर देखिए सेंसस जेतेबेले पॉपुलेशन सेंसस गवर्नमेंट कंडक्ट करूची तो गवर्नमेंट इंडिविजुअली पर्सन्स को पर्सन पॉपुलेशन को विजिट करी कि ताको डाटा कलेक्ट करूची फॉर गवर्नमेंट, दैट इज द प्राइमरी डाटा। वंस से डाटा पब्लिश हो जाउची कोठी पब्लिश कर दोची गवर्नमेंट, तो सेट डाटा बिकम्स द सेकेंडरी डाटा। दैट मींस वी नो दैट प्राइमरी डाटा वंस कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड becomes secondary data. So this is called as primary data. Next come to the secondary data. So secondary data यदि हमें देखिबा the data which is not directly collected but rather obtained from the published or unpublished sources. That means हम जो देखिबा एटा जेमति गवर्नमेंट जो सेंसस कंडक्ट करूची, गवर्नमेंट जेतल सेंसस डायरेक्ट कंडक्ट करूची देन सेंसस को हमें कहबा कोन दैट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा और प्राइमरी डाटा। काहे ना गवर्नमेंट निजे किछि ऑफिशियल्स अपॉइंटमेंट करूची देन दे कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द पर्सन्स डायरेक्टली, तो सेटा लगा कोन हैला सेटा हेगला प्राइमरी डाटा। जेते बेले सेम डाटाटा गवर्नमेंट कोन करची पब्लिश कर दोची एंड से हमें से रिपोर्ट जो गवर्नमेंट पब्लिश कला से डाटा रो हमें डाटाटा कलेक्ट करलु, तो सेटा कहबा सेकेंडरी डाटा। काहे कि ना सेटा को से डाटाटा ऑलरेडी गवर्नमेंट पब्लिश करची से डाटाटा को हम नहीं गइलु, तो दैट मे बी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेस रो भी डाटाटा कलेक्ट हेई पारे। एंड आल्सो हमें जो देखिबा तो ए जो सेकंड हैंड डाटाटा को हमें सेकंड हैंड डाटा भी कहि परिबा। सेकंड हैंड डाटा हमें जे इन द सेंस हमें एथि पई कहिबा कि सेकंड हैंड डाटा जेते बेले हमें डाटाटा कलेक्ट करूछु, तो जेते बेले डाटाटा हमें कलेक्ट करूछु सेकंड हैंड डाटा एथि पई कहूछु कि ऑलरेडी जने सेटा पब्लिश करिछु हमें डायरेक्टली लोक माने पहुंचनु हमें फास्ट डाटाटा कलेक्ट करिनु जोटे ऑलरेडी जो डाटाटा माने कोन सेटा प्रोसेस्ड डाटा और हमें कहि पे ऑलरेडी पब्लिश डाटा जोटा हितबा जोटा ऑलरेडी जने कलेक्ट कर दै हमें डायरेक्टली पहुंची कि से डाटाटा कलेक्ट करिनु जने कसे डाटाटा कलेक्ट करछि ताठु हमें डाटाटा नै गल, तो सेति पे एटा कहजिबो सेकंड हैंड डाटा। तो हमें जदार जे एग्जांपल जे देखिबा नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स पब्लिश्ड बाय द सीएसओ, तो सीएसओ में जे देखबे सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यदि किसी नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स पब्लिश जोटा सीएसओ करता है से डाटा हमें नहीं गलु कि इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जदि इकोनॉमिक सर्वेटा पब्लिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश कला इकोनॉमिक सर्वे रो रिजल्ट से रिजल्ट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सेकेंडरी डाटा। तो दिस इज द प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो हमें देखिलो प्राइमरी डाटा कोन सेकेंडरी डाटा कोन, एबे हमें देखिबा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा जदि डिफरेंस देखिबा तो बेसिकली हमें जदि देखिए तार डिफरेंस देखिबा तो प्राइमरी डाटा हम जदि कहबा प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल, हमें प्राइमरी डाटा को ओरिजिनल डाटा भी कहि परिबा। काहे कि ना एठी हमें कोन बना जो इन्वेस्टिगेटर थाए इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली रेस्पोंडेंट पाखु रेस्पोंडेंट और इन्फॉर्मेंट को और इन्फॉर्मर पाखरे डायरेक्ट जाई डाटाटा कलेक्ट करे, तो जेतेबेले से डायरेक्ट कलेक्ट करे तो से डाटाटा कोन ओरिजिनल रहइबो। तो सेहि पई एठी कोन प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल बिकॉज़ दे आर कलेक्टेड by the investigator himself data collect करे। then हमें जो देखिबा secondary data,
So secondary data are not original. Since it is original since investigator make use of the data collected by other agencies. That एठी कौन है एठी जो investigator द आमे जदि देखिबा प्राइमरी डाटा कौन इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली करे रेस्पोंडेंट्स पाकु जाए रेस्पोंडेंट्स पाकु जाई कि से डाटा कलेक्ट करे जिते से डायरेक्टली रेस्पोंडेंट पाकु डायरेक्ट कलेक्ट करे सर सेटा को ओरिजिनल डाटा में कहि परिबा कि एठी हमें कौन इट इज नॉट ओरिजिनल ओरिजिनल काहे कि नुए काहे ना एठी इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली रेस्पोंडेंट पाकु जाएनी से कौन करे किछि एजेंसीज और किछि आउ एजेंसीज जो माने ऑलरेडी डाटा को कलेक्ट करि दैथिबे सेही डाटा को जस्ट खाली यूज करे माने हियर द इन्वेस्टिगेटर ओनली मेक यूज द data which is already collected by other agencies. So it is is not original. ताले हम देख लो कि primary data are original while secondary data are not original. Then हमें देखिबा next हमें देखिए तो difference रे primary data are collected by some agency or persons by using the method of data collection. So primary data का जो collection हुई primary data रे कौन are collected by some agencies. किसी agencies जो माने primary data collect करंती by persons or persons by using the method of collection. Different methods of collection use करी की primary data collect करे जे either गोटे person that means the person or agency that they are called as investigators. Investigators जो मानती है से investigators data collect करती. But हमें जैसे secondary data देखिबा तो secondary data are already collected. तो सेटा कौन होबे ना collect already collected थाए and processed. सेटा माने जणे को एजेंसी सेटा already collect कर देथिबे ताको processed data थिबा by some persons or agency and is ready for use. तो secondary data टा खाली only use रे the investigator only कौन करे जो डाटा टा already collected है जी processed है जाई ये ताको खाने किसी एजेंसीज माने जो माने already ताको record करी process कर दैछन just माने खाली कौन करंती ताको हमें usable ready to use थाए secondary data. But while primary data देखिए primary data हमको different methods of collection use करी के हमें डाटा टा collect करिबा. Then हमें जो देखिए primary data देखिए primary data requires longer time for डाटा कलेक्शन. तो प्राइमरी डाटा रे कोन होय ना डाटा कलेक्शन करिया पई हमकु बहुत गुडे टाइम लागे काइना हमें जदी कोन देखिया प्राइमरी सोर्स रे ऑफ डाटा रे हमें प्राइमरी डाटा रे हमें कोन होना हमें इंडिविजुअली जो रेस्पोंडेंट्स जो मन थांदी जो रेस्पोंडेंट और इन्फॉर्मेंट्स अछंदी तांको पाकु हमकु जाई कि विजिट करिया पड़े तांको डाटा तो डिफरेंट मेथड्स अछि जोटा कि हमें लेटर रे हमें डिस्कशन करे लेटर डिस्कस्ड अबाउट दिस. तो सेठी कोन होबे ना टाइम कंज्यूमिंग रहे काहे कि ना हमको एठी जदी डायरेक्ट डाटा कंज्यूम हमें डायरेक्ट डाटा में देखिबा तो प्राइमरी डाटा रे कोन होबे ना हमको कोन प्राइमरी सोर्स में पूरा ताकर कोन होबे ना हमको डायरेक्ट रेस्पोंडेंट्स पाखु पहुंचे पड़े रेस्पोंडेंट्स टू डायरेक्ट कलेक्शन करे तो इट विल टेक टाइम. पहले हमें जो देखिए सेकंड डाटा ऑलरेडी पब्लिश माने ई जो हम जो डाटा कलेक्शन ता जने करि सच्ची हमें खाली जो डाटा रिपोर्ट टा जो अच्छी जो पब्लिश डाटा अच्छी चलो जस्ट खाली हम यूज कर दो ताले हमें देखियो यदि प्राइमरी डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा बाय यूजिंग प्राइमरी सोर्स जोटा प्राइमरी डाटा रिक्वायर्स लॉन्गर टाइम फॉर डाटा कलेक्शन व्हाइल सेकेंडरी डाटा रिक्वायर्स लेस टाइम. सेकेंड डाटा हमको वैसे किसी टाइम लागे ही नहीं कहीं ना सेकेंडरी डाटा इजीली हमको मिल जो ऑलरेडी पब्लिश और अनपब्लिश सोर्सेस हम जीवा नहीं आसीबा. देन हम जो देखियो प्राइमरी डाटा देन this comes so the collection of primary data requires a considerable amount of money and personals as whole plan of investigation is initiated. जेतेले हम देखिया collection of primary data requires considerable amount of money हम माने एठी कोन किछि एक्सपेंसेस हम जे देखिबा किछि एक्सपेंसिव रहे किछि मनी रिक्वायरमेंट हुए क्यों काहे कि ना हमर देखिबा जदी जो आमे सपोज गोटे इन्वेस्टिगेटर्स माने बहुत गुडे कोन लोक माने अपॉइंटमेंट करिवे काना एठपे जे तमे इन्वेस्टमेंट करिया जतल तमे गोटे इन्वेस्टिगेशन करिवो लोक माने को पकरे पहुंचीबो रेस्पोंडेंट्स पाखो पहुंचिया पई हेले तमर कोन पर्सनल्स बहुत गुडे पर्सन्स दरकार से माने जाई कि से प्लान रे काना गोटे तम पर्सन्स दरकार तबे तमको सैलरी भी दबो तांका रेम्युनरेशन भी दबो इतपे गोटे कोन इट इज बोथ टाइम कंज्यूमिंग इट आल्सो रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ मनी एंड आल्सो लॉट्स ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड फॉर प्राइम कलेक्शन प्राइमरी डाटा कहना प्राइमरी डाटा रे तुमको लोक दरकार टाइम दरकार एंड आल्सो मनी दरकार कहना जो लोक माने सेमती फ्री ले जाई काम करिवेनी ताको यू हैव टू गिव देम देयर रेम्युनरेशंस. तो एथि पई हमरा कोन कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा रिक्वायर्स ए कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ मनी एंड पर्सनल्स आज होल प्लान ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज इनिशिएटेड. हम इन्वेस्टिगेशन करिया को चाहिले हमें प्राइमरी डाटा रे हम कलेक्ट करिया पई हेले हमको बहुत बड़े मनी टाइम एंड आल्सो पर्सन्स दरकार. देन हम जे देखो सेकेंडरी डाटा देखिए सेकेंडरी डाटा इज चीपर in comparison to primary data. Secondary data is cheaper. Why? Because already someone has collected data, some agencies has already collected data and the data is maybe published or unpublished item, but you have to just take it and take the data from the agencies who have already collected data or from any published sources. So secondary data is cheaper. So these are the
difference between primary and data. Let's come to the next come to methods of collecting primary data. So we have already discussed about primary data and secondary data. Now we will go to the methods of collecting primary data. In this we discussed about different methods of collecting primary data. There are lots of methods we use for collecting primary data. So let's have a look on this. That's direct direct personal investigations. गोटे मेथड देखिए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशंस, information from correspondents, telephonic interviews, mail questionnaire methods, questionnaires filled by enumerators. So these are the methods of collecting primary data. Next, let's explain each one by one all the methods. So next, the first method is direct personal investigations. So it is one of the methods of investigation, that is direct personal investigation. So under this method, and this is the first method of collecting primary data. Under this method, the investigator collects data by having direct contact with informant or respondent and conducts the spot inquiry. So in direct personal, from the name we know that direct personal investigation. That means here the investigator will directly visit, directly meet the directly meet the respondent or informant and collect them the data, conducts the inquiry. So in direct investigations ताले एठी कौन हुए ना direct personal investigations रे हमारा कौन हुए investigator जे था से कौन करे ना directly से जो respondents अछंती जो informants अछंती तांको पाखरे directly contact करी तांको meet करी कि तांको जो data टा collect करे. तो एठी कौन होबा ना जो हम जो direct personal investigations देखिबा तो एठी कौन हुए ना जो हमारा investigators डायरेक्टली मीट करे एंड सेठी ताको से एग्जैक्ट तारो जो कोन स्टडी स्टैटिस्टिकल स्टडी कोन कर पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ताको एक्सप्लेन करि परिबो कहा पाखु से जो रेस्पोंडेंट को सो दैट से रेस्पोंडेंट्स रो व्यू टा नहीं परिबे रेस्पोंडेंट रो जो व्यू रेस्पोंडेंट्स रो जो ताटो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करियो ता पई रेस्पोंडेंट्स रो जहां भी क्वेरीज थिबो ताको से एक्सप्लेन करि कि एंड तारो जहां भी कंफ्यूजन थिबो सेटा सब से क्लियर करि परिबो. तो एठी कोन होबो ना एठी हमें आगो देखबा गोटे विजुअल अपीयरेंस भी हमें सेठी चेक करि परिबा काना हमें किछि क्वेश्चंस हमें जतले पचारिबा हमें गोटे किछि भी हमें जदी व्हाट टाइप ऑफ इंटरव्यू नेबा काटू जो रेस्पोंडेंट्स को सेठी हमको हमरो देखिबारे छि ताकर बोथ से माने कोन कहउछनी एंड आल्सो देयर फेशियल अपीयरेंस देयर विजुअल अपीयरेंस विल डिसाइड वेदर से माने सेठी सेटा किछि मिछ कहउछनी कि कोन कहउछन ताकर सेथुर भी हमें किछि जज करि परिबा से एक्चुअल जिंसटा कोन. तो एठी कोन होय ना इन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस एठी हमरा इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट जाय कि रेस्पोंडेंट्स को तांकर जो इन्वेस्टिगेशन रो पर्पस सेटा को एक्सप्लेन करे कि तांकर डाटा इनफॉरमेशन नहीं पारे. तो एठी कोन ई जो डाटा एटा हमें जे देखिबा एटा ऑलमोस्ट हमें कोन बना हमर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस इन्वेस्टिगेशन टा करि परिबा काहे इन्वेस्टिगेशन हमें हमर फ्लेक्सिबिलिटी हे परिबा हमें चेंजेस करि परिबा आज पर आवर द सिचुएशन जहा डिमांड करछु सेही अनुसार हमें ऐड करि परिबा. तो हमें जे देखिबा दिस मेथड रो सुइटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड तमे जे सुइटेबिलिटी देखिबा सुइटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड मींस हमें को जगह रे हमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करि परिबा. तने इट इज एटा गोटे मेथड जो मेथड हमें डाटा कलेक्ट करि पारे. तो इट को सुइटेबिलिटी कोन दरकार को टाइप रो सिचुएशंस रे हमें दिस मेथड्स हमें अप्लाई करि परिबा. तो फर्स्ट हमें जे दे सुइटेबिलिटी व्हेन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हैज टू बी कलेक्टेड जेते हमको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दरकार काना हमें एठी जेतले पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हमें करूछु डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हमें जाउछु रेस्पोंडेंट पाखु डायरेक्टली जाउछु तो डायरेक्टली हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिबा ताले सेठी कोन हमको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल पारे. जेते बेले हमको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट इज हमर स्टैटिस्टिकल स्टडी रिक्वायर ए डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वी गो फॉर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस. देन हमें नेक्स्ट देखियो व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड. देखो एठी जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस ता सब बेले सुइटेबल हुए जोठी हमर कोन हुए ना इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड हमर जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन ता लिमिटेड थाए कहना हमें डायरेक्टली पर्सनल इन्वेस्टिगेशन गोटे लार्ज एरिया रे वाइड एरिया रे कंडक्ट करि परिबा नाही. सपोज हमें गोटे पर्टिकुलर लोकेशन रे हमें जाईकी सेठी किछि लोकन को पचारी कि हमें किछि इंटरव्यूज नहीं परिबा कि हम जदी गोटे सिटी देखिबा गोटे स्टेट देखिबा गोटे डिस्ट्रिक्ट देखिबा सेथरे एग्जैक्ट समस्ते जाई परिबनी काहे ना एटा पॉसिबल नुह सेठी गोटे पर्टिकुलर ऑन द स्पॉट और गोटे पर्टिकुलर लोकेशन गोटे लिमिटेड एरियास रे एटा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन टा सुइटेबल हबो काहे ना अदर जदी भास्ट एरिया हैला त सेटा किछि इफेक्ट हबनी माने हमरा फ्रूटफुल हबो नै. देन हमर रहला द व्हेन नेचर ऑफ इंक्वायरी इज कॉन्फिडेंशियल जेते बेले हमर इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करिबा
काटू रेस्पोंडेंट्स टू तो से इनफॉरमेशन इज कॉन्फिडेंशियल मींस दैट नीड्स टू बी केप्ट सीक्रेट जोटा आम सिक्रेसी मेंटेन करिया चाहूथवा तो सही केस रे आम कौन करबा ना डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नेबा कहीं ना एठी तमे डायरेक्टली इन कांटेक्ट विथ द रेस्पोंडेंट आसला रेस्पोंडेंट संगे डायरेक्ट कांटेक्ट आसला तो सेठी जहां भी से इनफॉरमेशन देबे तमे सेटा को यू हैव टू कीप सीक्रेट तो एठी तमे सिक्रेसी मेंटेन जो जगह रे जो स्टैटिस्टिकल स्टडी रे हमर रिक्वायरमेंट थाय कि आमे हमर जो इनफॉरमेशन जोटा आमे गैदर करिवा फ्रॉम रेस्पोंडेंट्स दैट टू बी कीप सीक्रेट तो सही केस रे आमे कोन करबा ना आमे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस करबा देन आमे जो देखिबा द व्हेन द मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड दैट इज जो जगह रे हमको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मींस हमको करेक्ट रिजल्ट दरकार माने एक्चुअल जिंस हमको फैक्ट्स जानिबार अछि मींस पूरा एक्यूरेट फैक्ट्स हमें जानिबार अछि किछि हैपेजेडली हमें जानिबार नै तो सही केस रे हमें कोन करबा ना हमें direct personal investigations methods apply करि परिबा for collecting data that means when maximum degree of maximum degree of accuracy is required जोटी high degree of accuracy दरकार अछि से केस में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जिबा काहे कि ना एठी डाटाटा इनएक्यूरेट हेबार चांस बहुत कम अछि काहे कि ना हमें डायरेक्टली लोक मानक बगर विजिट करछु डायरेक्टली तांको डाटा कलेक्ट करछु तो इन व्हेन वी कलेक्ट द डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द रेस्पोंडेंट्स डायरेक्ट तो से केस रे इनएक्यूरेट हेबार चांस बहुत कम रहे then हम देखिबा when importance is given to the originality जेतेबेले हमर स्टैटिस्टिकल स्टडी requires an originality तो originality of data जेतेबेले हम स्टैटिस्टिकल स्टडी दरकार होछि कि हमें ओरिजिनल डाटा दरकार हमको डाटा रे किछि माने ओरिजिनल डाटा दरकार मींस पूरा एग्जैक्ट डाटा दरकार तो सही केस रे हमें कोन करबा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस को जिबा तो these are the suitability of these methods next हमें देखिए तो हमें सुटेबिलिटी रे में कौन जानलु एक तो रहिला कोन जेतेबेले हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट हुए दरकार हुए स्टैटिस्टिकल स्टडी नीड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देन वी हैव टू ग्रो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन देन when area of investigation is limited when the area of investigation is limited then also we have to go for direct personal investigation when the nature of inquiry is confidential then also we have to use direct personal investigation when the maximum degree of accuracy required when importance is given to originality in these cases we will use direct personal investigation methods for collecting data then comes to the merits of direct personal investigation so what are the merits that is advantages or advantages of using direct personal investigation first advantages or merits is originality here by using direct personal investigations the data that we are collecting is original because the investigators directly collect the data from the respondents so it is now one of the advantages of direct personal investigation then the data that we are collecting are reliable and accurate here in direct personal investigation the data which we are collecting are reliable and we can reliable जदि हमें देखिबा द रिलायबल मींस हमें एठी ताको भरोसा योग्य होइतबा एंड एक्यूरेट मींस करेक्ट डाटा थिबा दरकार तो एठी कोन होय ना डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन रे जो डाटा में कलेक्ट कलु ताको हम भरोसा करि परिबा काहे कि ना इन्वेस्टिगेटर निजे जाई कि डाटाटा कलेक्ट करिछि फ्रॉम रेस्पोंडेंट सो एटा दीज आर रिलायबल एंड एक्यूरेट देन फ्लेक्सिबिलिटी हम यदि फ्लेक्सिबिलिटी देखिबा तो फ्लेक्सिबिलिटी कोन फ्लेक्सिबिलिटी कहले कोन हो ना हमर जो सिचुएशन हमें गले डायरेक्ट देखो एठी एटा वन टाइप ऑफ कहि गले पर्सनल इंटरव्यूज भी कहि परिबा जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एठी कोन हो ना डायरेक्ट जो इन्वेस्टिगेटर अछि से इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली जाई कि काटो विजिट करे रेस्पोंडेंट्स पाखु देन ताकू किछि क्वेश्चंस पछारे से अनुसार से अकॉर्डिंगली आंसर्स नि तो एठी कोन फ्लेक्सिबिलिटी हम जो देखिबा तो सी जेति जो सपोज किछि क्वेश्चन से पछारछि से क्वेश्चंस रे से देखिला कि जो रेस्पोंडेंट रो रिएक्शन से तू जानि परला कि नै ए क्वेश्चन हम यदि पछारिबा से मे बी आंसर न देई पारे तो से कोन होबा ना ता सिचुएशन को देखि कि जो रेस्पोंडेंट रो विजुअल अपीयरेंस को देखि कि से कोन करबा ना तो क्वेश्चन चेंज करि परिबो तो ए जो केस जो क्वेश्चन चेंज करि परला दैट कहबा कोन दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबिलिटी दैट मींस according to the situation according to the need of the situations the investigator changes their questions तारा क्वेश्चन पैटर्न जो बळे से क्वेश्चन पचारिबो कोन तारा जो पर्पस ऑफ स्टडी टाको से चेंज करि पारिबो है ना से जहां चाहे सपोज देखला कि गोटे लोक से किछ क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन पचारिबो चाहूची बट देखला कि नहीं से फ्रीली आंसर दोउची से आउ किछ स्टडीज भी करि पारिबो और डिटेल्स रे भी स्टडी जे गाई पारिबो देन होला यूनिफॉर्मिटी मींस जेतेबेले हमें कलेक्शन डाटाटा कलेक्ट करिवा जेहेतु हमें डायरेक्टली जाउची डायरेक्टली हमें कोन करिवा ईच एंड एवरी हमें जो जदी गोटे माने पर्सन्स टू हमें डाटाटा कलेक्ट करिवा तो हमें सेठी कोन डाटाटा यूनिफॉर्मिटी काना हमर जहा जानिबार अछि से जिंसटा हमें पचारि पारिबा
क्या हमर जो रिक्वायरमेंट्स अछि हमर स्टैटिस्टिकल स्टडी रो जहा रिक्वायरमेंट अछि अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन तांग पचरबा से अनुसार आंसर पाई परिबा देन हमें देखिबा मेरिट्स अनदर मेरिट्स ऑफ दिस डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज इकोनॉमिकल जिते हमें इकोनॉमिकल कहिबा तो इकोनॉमिकल इन द सेंस दैट when the statistical study is done with a limited area हमें जदी गोटे लिमिटेड एरिया रे हमें जदी स्टडी करूछु इन दैट केस डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज इकोनॉमिकल कहना हमें जदी गोटे पर्टिकुलर गोटे छोटो एरिया रे हमें जदी गोटे कम लिमिटेड एरिया रे हमें जदी हमें कोन करिया एटा कंडक्ट करूछु दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल काहे कि ना कहना हमें सपोज गोटे पर्टिकुलर गोटे आम गलु गोटे पर्टिकुलर लोकेशन रे जाइए आम डाटा कलेक्ट कल से कौन हम से जन गला से डाटा कलेक्ट कला दैट इज इकोनॉमिकल बट आम जो वाइड एरिया रे करबा दैट इज नॉट इकोनॉमिकल देन देखिए सुइटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस तो एठी कौन हला ना डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज सुइटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट इज आम ऑल क्वेश्चंस आम डिफरेंट जो भी टाइप रो क्वेश्चन पचारे चाहिबा से क्वेश्चनटा आम एठी पचारि पारिबा काहे कि ना आम लोक मानकर जो जहाँ को रेस्पोंडेंट्स पचारे रेस्पोंडेंट्स रो माने जो आंसर पैटर्न जो बेले से आंसर दउती से को टाइप रो कहूची तार आमे जदी बिहेवियर रो आमे जानी कि आमे पचारि परिबा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पचारि परिबा तो एठी आमे कोन एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहाँ भी आमे क्वेश्चंस पचारिया चाहिबा सब क्वेश्चंस पई आमे एई मेथड ता सुइटेबल तो दीज आर द मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन लेट्स कम टू द डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन तो जदी हमें डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन देखिबा तो द फर्स्ट जोटा डिमेरिट जोटा को हमें ऑलरेडी डिस्कशन करथुल सुइटेबिलिटी रे एंड मेरिट्स दैट इज नॉट सुइटेबल फॉर वाइड एरियाज दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज नॉट सुइटेबल फॉर वाइड एरियाज हमें एटा जोटा कि तार मेरिट्स लागि से लिमिटेड एरियाज रे हमें एई मेथड ता हमें फॉलो करि परिबा तो किंतु यदि हमर एरिया ऑफ स्टडी तो हमें जो स्टैटिस्टिकल स्टडी हमें करिया जो वाइड एरिया रे करिवा तो से वाइड एरिया रे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज नॉट सुइटेबल मींस हमें सेटा को यूज करि परिबा नाही काई देन हमें देखे एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग जदि कहबा ताले हमें डाटा कलेक्ट करिया पई बहुत गुडे हमें लोक माने को अपॉइंटमेंट करिवा जो माने जाय कि रेस्पोंडेंट्स डाटा कलेक्ट करिवे तो गोटे जदि हमें गोटे रेस्पोंडेंट जदि गोटे इन्फॉर्मेंट से हमें जदि गोटे रेस्पोंडेंट्स और इन्फॉर्मेंट से हमें कण कथा है कि ता सहित हमें डिस्कशन करी डाटा कलेक्ट करू दैट इज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कहना हम जब गोटे मिनिमम एटलिस्ट 5 to 10 मिनट्स गोटे पई लगे तो हमें डिफरेंट लोकेशन को जाई कि डाटा कलेक्ट करिवा दैट विल कण टाइम वंस टाइम कंज्यूमिंग हेबियो ऑल्सो हमें जो डिफरेंट बहुत गुडे लोगों को एन्यूमरेटर्स और हमें जो इन्वेस्टिगेटर्स को अपॉइंटमेंट करिवा जी जाई कि इन्वेस्टमेंट करिवे तो जो इन्वेस्टिगेट करिवे तो से माने कोन होबा ना तो एक्सपेंसिव तांको सैलरी देबा ता रेम्युनरेशन देबा दैट विल लीड्स टू दैट मींस एठी कोन होबा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग काहे ना जते बेले हमें बहुत गुडे टाइम लगे डाटा एक तो टाइम लगिवो कारण डाटा जते कलेक्ट करिवो डिफरेंट एरिया रे डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर जाई कि जते डाटा कलेक्ट करिवे एटा टाइम कंज्यूमिंग होबो देन हम जो अपॉइंटमेंट जो पर्सनल जो लोक माने को हम अपॉइंटमेंट करिवो फॉर कलेक्टिंग डाटा तो ताको तो हम रेम्युनरेशन देबा तो एथि पई एथि कोन होबो एक्सपेंसिव एंड आल्सो टाइम कंज्यूमिंग देन पर्सनल प्रिजुडिस जदि कहबा तो पर्सनल बायसनेस मींस पक्षपात हमें जब देखिबा ताले एथि कोन होबो ना पर्सनल प्रिजुडिसटा रहिबो सब बेले काहे ना जदि हमें जो इन्वेस्टिगेटर जाइथिबो से जो पर्टिकुलर गोटे सब्जेक्ट ऊपर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू ता माइंडसेट अछि देन से जो डाटाटा कलेक्ट करिवो से सब बेले सेही उपेक्षे बन जिवो ताले हमर एथि कोन होबा ना हम जते बेले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करिबा ताले एथि कोन होबा निरपेक्ष भाबे हमें डाटाटा कलेक्ट करिबा देन अनबायस्ड रहिबा दरकार दैट इज गोटे पर्टिकुलर मैटर गोटे पर्टिकुलर सेक्टर सब्जेक्ट मैटर ऊपर हमें जदि बायसनेस रहिबो देन वी कैन नॉट गेट द करेक्ट हमें डाटाटा पाई परिबानी काहे कि ना हमें गोटे ऑलरेडी हमें गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट पटे हमें बायसनेस अछु मींस पक्षपात अछु तो ता माने हमें सेठी कोन डाटाटा हमें डायरेक्ट हमें सिंपल हमें कोन करबा ना हम जो डाटाटा गोटे एक्यूरेट डाटा आसीबनी देन रहला ट्रेन्ड पर्सनल तो एठी कोन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पाई हम गोटे ट्रेन्ड पर्सनल दरकार कहना एठी हम जेहेतु डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होची गोटे डायरेक्ट गोटे लोक गोटे रेस्पोंडेंट्स पाकू जाई कि तांको तो डाटा कलेक्ट करिबा दैट विल टेक्स कोन दैट एथि पई कोन गोटे ट्रेन्ड पर्सनल दरकार कहना तार बिहेवियर तार एटीट्यूड से केमिति डील करूची से केमिति लोक मान को टैक्टफुली हैंडल करूची कहना तुम तबे जीव इन्वेस्टिगेशन पई डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन तुम फाइंड करो एमति सब माने कहना ह्यूमंस आर कोन दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर कहना हमें जो ह्यूमन बिहेवियर को हमें जज करि परिबन दे ह्यूमन बिहेवियर इज ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड
तो से क्या सहित केमी डील करेंगे तो से सब बेले से कौन बना प्रॉपर्ली ट्रेंड होता दरकार एंड ऑल्सो से प्रॉपर्ली ट्रेन हो केमी लोक सहित केमी बिहेवियर करेंगे लोक केमी हैंडल करेंगे दैट विल ये कौन दैट विल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्रेन पर्सन कहीं जो ट्रेन पर्सन नथिबो से कौन हम ना लोक बिहेवियर अनुसार से रिएक्ट कर से रिएक्ट कला तार माने गोटे गुड टेम्परामेंट रहा दरकार तो से पर्सन पाखे जब टेम्परामेंट ठीक नहीं तो से टेम्परामेंट लूज कर टेम्पर लूज होगा मीन दैट विल नॉट गेट द तुम जो सॉल्यूशन जो तुम जो कलेक्ट कर इनफॉरमेशन मिल नहीं तुम यू हैव टू जो इन्वेस्टिगेटर जो पर्सनल जाइए जो इन्वेस्टिगेशन करने दे माने कौन से सिचुएशन को प्रॉपर्ली कौन हैंडल कर पार्थिबा दरकार देन से माने कौन बना लोक मान सहित प्रॉपर्ली डील कर दरकार डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोक कहते डिफरेंट टाइप्स ऑफ से आंसर देबे डिफरेंट से माने कहबे तो समस्त मिसिकी से तो कौन इनफॉरमेशन दे पारियो तो एटा गोटे ट्रेन पर्सनल दरकार यानी जदि हमें ट्रेन पर्सनल तो आमे सब जगह जदि प्रॉपर ट्रेन पर्सनल न मिलले देन आमे डाटाटा कौन प्रॉपर्ली कलेक्ट करि परिबा नाही देन आमे देखिबा किछि प्रिकॉशंस जदि हमें प्रिकॉशंस देखिबा तो प्रिकॉशंस मीन्स आमे कौन सावधानता नेबा और सतर्कता नेबा व्हाइल अप्लाइंग डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मीन्स कौन कौन आमे फॉलो करिबा सो दैट हमर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन टा परफेक्टली कंडक्ट करि परिबो कना जदि गोटे हमर डाटा कलेक्शन मेथड टा कना डाटा ऊपर एंटायर स्टैटिस्टिकल जो स्टडी इज डिपेंडेंट ऑन डाटा तो डाटा कलेक्शन जो आम करवा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आम किसी सावधानता आमको फॉलो करिया पड़े सावधानता अवलंबन करिया पड़ो जमती सपोज रहा जोटा कि रहा प्रिकॉशंस रहा से प्रिकॉशन रहा इन्वेस्टिगेटर्स शुड बी वेल वर्स्ड विथ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड शुड हैव गुड टेम्परामेंट दैट मीन्स आमर ये जो इन्वेस्टिगेटर थी से इन्वेस्टिगेटर आम जो भी इन्वेस्टिगेटर को आम पठेबा से इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी वेल वर्स्ड मीन्स टेक्निकली से साउंड थी दरकार विथ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जहाँ भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टूल्स से सब प्रॉपर्ली यूज करिया दरकार मींस टेक्निकली से साउंड हितबा दरकार एंड शुड हैव गुड टेम्परामेंट मींस वेल बिहेव थिबा दरकार दैट मींस से इजीली मींस इरिटेट हो नथबो इजीली इरिटेट न होथबो कि गोटे माने कोन रागी जाउथबो टिके टिके काहे ना तमे जब डायरेक्ट लोकन साथ मीट करछो डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन्स अछनी पर्सन्स को हमें तांकर बिहेवियर को हमें कोन करि परिबेनी तांको हमें जज करि परिबेनी को डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट तमे सेम क्वेश्चन पचारिबो डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट रिएक्शन आसीबो तो से रिएक्शंस को तमे इरिटेट हबर इजीली इरिटेट न होथबा दरकार एंड आल्सो इजीली से रागी जाउ नथबो तो एटा रहिला गुड टेम्परामेंट सो दैट मींस हमें द प्रिकॉशन फॉलो करिया कोन इन्वेस्टिगेटर should be well versed with the statistical techniques and should have good temperament और good temperament रहितबा दरकार देन हमें जो देखिबा investigator should be familiar with the culture tradition and language of the concerned area जिते बेले गोटे इन्वेस्टिगेटर आमे गोटे पर्टिकुलर कोन अपन आमे सब आमे लिमिटेड एरियाज रे वर्क कराबो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस तो जिते बेले आमे लिमिटेड एरियाज रे आमे वर्कआउट करिबा तो जो एरियाज रे आमे से इन्वेस्टिगेशन टा कंडक्ट करिबा से पर्टिकुलर एरिया सहित जो भी इन्वेस्टिगेटर्स इन्वेस्टिगेट करिया पई जिबे जो स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करिया पई जिबे से मस्ट बी वेल नोन विद द वेल फैमिलियर विद द कल्चर से एरिया रे कल्चर ट्रेडिशंस एंड आल्सो लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न एरिया से एरिया रे लैंग्वेज सहित से फैमिलियर हेइतो दरकार काहे कि ना आमे जतरा स्टैटिस्टिकल आमे तांको लैंग्वेज न पचे जदी क्वेश्चन न पड़ जोटा कि आमे कहबा जदी वर्नाक्युलर लैंग्वेज हम जदी यूज न करिबा त सी कोन होबन से मान मे भी आंसर न देबे यू हैव टू काना जणे जतरा हमें इन्वेस्टिगेटर जतरा जिवो रेस्पोंडेंट संगे से मिसियो दे केमिति रेस्पोंडेंट आंसर दबो त एमिति जे कि तमे डायरेक्ट जाई क्वेश्चन पचारे जणे आंसर न दबो नहीं काहे कि ना यू हैव टू ताका साथ मिसियो पड़ियो से माने केमिति तम आंसर ता देबे तो सेति पई तमे ता कल्चर ट्रेडिशंस ए सब ता लैंग्वेज से तो कोन फैमिलियर हेइथो दरकार जदी फैमिलियर हेइथो देन द यू विल गेट द डाटा इजीली तो देन रहिला investigators should ask straight simple and unambiguous questions from the informant तो एठी जतोळे इन्वेस्टिगेटर जीव क्वेश्चन पचारे तो क्वेश्चन ता मस्त स्ट्रेट क्वेश्चन हेइतो दरकार सिंपल क्वेश्चन हेइतो दरकार जोटा कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जदी हो सेटा को सेम पचारिया कथा न कना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जने आंसर देबे नै देन अनएम्बिगुअस मींस अनसर्टेन क्वेश्चन हेइतो दरकार मींस तो एक्जेक्टली क्लियर मीनिंग रहितो दरकार जोटा जने क्लियरली जने बुझी परतो दैट मींस एमती नो कि तमे गोटे क्वेश्चन पचारतो गोटे मीनिंग रे आउ जने आउ गोटे मीनिंग रे आंसर दउथो तो सेटा हबनी तो दैट मींस द क्वेश्चन शुड बी क्लियर सिंपल एंड स्ट्रेट क्वेश्चंस हमें पचारि परिबा तो एठी कोन हैला जतले हमें इन्वेस्टिगेटर्स जतले जोटे क्वेश्चंस पचारिबो दैट मींस दैट क्वेश्चन शुड बी asked as straight simple and unambiguous questions that is clear questions from the informants the informants को clear question पचार देन रहला no personal bias should be used by the investigators तो investigators कोन रहला ना जो इन्वेस्टिगेटर्स
जो माने इन्वेस्टिगेटर जो दिबे से माने दैट मीन्स नो पर्सनल बायस मीन्स किसी पक्षपात न रहिबा दरकार काना निरपक्ष भावे सी कौन हम इन्वेस्टिगेट करिवो जेतबे से इन्वेस्टिगेटर जीव गोटे पर्टिकुलर मैटर ऊपर तार जति किसी बायसनेस अछि पक्षपात रही त सी कौन केबे भी गोटे करेक्ट डाटाटा कलेक्ट करि परिबन सी सब बेले जानिबो एजेंसीटा भलो कि एजेंसीटा खराब ता ऊपर गोटे पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऊपर तार फेवर आइदर फेवर रे थिबो और एगेंस्ट रे थिबो ताले सी कोन होबो ना सी डाटाटा परफेक्टली कलेक्ट करि परिबो नाही दैट मीन्स द बेस्ट आमे जो प्रिकॉशंस देखले तो देला नो पर्सनल बायस दैट मीन्स द पर्सन हु आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द मैटर और इन्वेस्टिगेट करिया जे जाउची डाटा कलेक्ट करिया में सी कोन होबो दे इट इज फ्रॉम फ्री फ्रॉम एनी बायसनेस and that is unbiased थिबा निरपक्ष भावे से डाटा को इन्वेस्टिगेट करिवो तो दिस आमे जे देखिबा ताले हमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस रे हमें ऑलरेडी डिस्कशन हमें कलु डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस कोन तार मेरिट्स तार सुइटेबिलिटी डिमेरिट्स एंड प्रिकॉशंस तो हमें जो बेसिकली हमें जो जानिलो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन रे हमें कोन कोन रहिलो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन रे एक तो हमर पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस रे हमर रहिला डाटा जो इन्वेस्टिगेटर जो डाटाटा कलेक्ट करे से डाटाटा दैट शुड बी डायरेक्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट है कि रेस्पोंडेंट कर एठी कोन होय ना जो इन्वेस्टिगेट हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन रे हमें एक तो हम जितबे डाटाटा हम जो केस रे हम डाटाटा को एग्जैक्ट डाटा दरकार एक्यूरेसी दरकार ओरिजिनलिटी दरकार से केस रे हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करि परिबो तो एठी कोन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन रे गोटे बेस्ट जिंस हला कोन ना एठी कोन बना जो इन्वेस्टिगेटर थिबो से इन्वेस्टिगेटर्स तो बोथ आज वेल एज तार जो क्वेश्चंस रो आंसर्स आज वेल एज तार जो फिजिकल अपीयरेंस थ्रू भी सी जज करि परिबो किछि आंसर्स से पाई परिबो तो एठी हमर बेसिकली हम जदी डायरेक्ट जोठी हम लिमिटेड एरियास रे जदी हम लिमिटेड एरिया रे हमर स्टडी करूछु स्टैटिस्टिकल स्टडी देन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बेस्ट देन व्हेन हमर जदी डाटाटा में किछि कॉन्फिडेंशियल डाटा रो इंक्वायरी होउची तो से केस रे हमको कोन दरकार हमर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरमेंट अछि दैट मींस हमें जदी ओवरऑल देखिबा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन रे हमर डाटाटा जोठी कोन होय ना इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली रेस्पोंडेंट्स डाटा कलेक्ट करे एंड इट हैज लिमिटेड स्कोप जोटा हम लिमिटेड एरियास रे एटा वर्कआउट हुए एंड विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जोठी दरकार वे सेठी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी थाए से जगह रे हमर कोन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरमेंट हुए एंड आल्सो जोठी हमें ओरिजिनल डाटा दरकार तो इन दिस केसेस हमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस करि परिबा तो बेसिकली हमें आज हमें जो डिस्कशन कलु कलेक्शन ऑफ डाटा रे हमें किसी इंपोर्टेंट टर्म्स हमें डिस्कशन कलु द सोर्सेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा हमें ऑलरेडी देखिलु कि सोर्सेस ऑफ डाटा दैट इज इंटरनल सोर्सेस एक्सटर्नल सोर्सेस रे हमें देखिलु कि प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा एंड आल्सो हमें डिस्कशन कलु तो फर्स्ट मेथड जोटा हमें ऑलरेडी डिस्कशन कलु जो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग जो प्राइमरी डाटा रो जो फर्स्ट मेथड थिला डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस को हमें कलेक्ट कलु एंड so this is all for this class. In the next class we'll discuss the other methods of collecting the primary data. Thank you.